in which we had relationship between supply, demand, and price. We had seen the graph like this. So in which there is the inverse relation. It was the inverse relationship between price and demand, and there is the positive relationship between price and supply. As price increases, supply in the market increases. As price decreases, supply in the market decreases. Getting this? And demand and supply are negative related. Means what? When supply increases, at that time demand decreases. Why? Because prices, when supply increases, at that time automatically prices increases. Okay, when there is an increase in price, at that time increase in supply, so that there is the demand will decrease. Okay, so that we had seen in the last lecture. Now let us go for to market equilibrium. In the second unit we have seen about the consumer equilibrium. So consumer equilibrium क्या है, यानी क्या होता है? This is the equilibrium point at which or above which consumer cannot purchase the products. Getting this? This is something about consumer equilibrium. Means what? This is the saturation level of consumer above which he doesn't want to purchase the units or the product. That was about consumer equilibrium, which we had studied in second unit. Okay, now here we have to study the market equilibrium. Now to have exact balance between exact adjustment between the demand and supply and price, as a manufacturer we should know the market equilibrium. Market equilibrium is, again, it is the equilibrium point at which your supply and demand should be equal. So if your supply and demand are equal, at that time you should not produce more. At that time you should stop to produce more. That is something about market equilibrium. So market equilibrium is the situation where the particular goods supply and demand are equal. Supply and demand are equal. Means what? If you reduce the supply or if you increase or decrease in the price, at that time demand will remain steady. So when the market is in equilibrium, there is no tendency for prices to change. So if your demand will remain as it is, though you decrease the prices, that time also demand is not going to change. समझ में आ रहा है concept? Means what? If you decrease the prices, at that time demand may increase up to certain level. But after that level, if you decrease again prices, demand will not increase. हम लोग क्या बोलते हैं कि what is the relationship between supply and demand? जैसे कि हम लोग प्राइसेस कम करेंगे, उससे क्या हो जाएगा? डिमांड बढ़ेगा कोई भी प्रोडक्ट का. लेकिन कुछ स्टेज ऐसा आ जाएगी, उसके नीचे अगर हम लोगों ने प्राइसेस भी कम किए, तभी भी जाके डिमांड बढ़ेगा नहीं. That point is called as a market equilibrium, where supply and demand will be equal. So that accordingly, if you produce more, if you send the supply in the market, that time that supply will be excess supply, which will be not consumable. ठीक है? तो डिमांड एक बार स्टेडी बन गया, उसके बाद कितना भी मैन्युफैक्चरिंग करो, कितना भी सप्लाई मार्केट में करो, दैट सप्लाई विल बी एक्सेस. Excess supply means what? Consumer will not purchase this. So you as a manufacturer, as a businessman, you need to understand that condition or equilibrium point. The market occurs. Market यानी क्या है? Where buyers and sellers meet to exchange the money for the goods. Market यानी क्या है? This is the physical place, or it is the place at which buyer and seller are coming together, and they are exchanging money with respect to goods. The price mechanism refers to how supply and demand interact to set market price and amount of goods sold. So this is the price mechanism. Means what? What is the price? How you are going to decide the price? Price is the thing at which your supply and your supply and demand are meeting with each other. तो यहाँ पे हम लोगों को market equilibrium देखना है. So just look towards the market equilibrium. What is the market equilibrium? So in this diagram, I have shown on x-axis I have taken the prices, on y-axis I have taken quantities, and D is your demand,
The graph, the line of D is your demand and S is your supply. Okay, so what is the equilibrium point? The point at which your supply graph and demand graph interacting or intersecting with each other. That point is called as the equilibrium point. Means what? Your quantity Q1 will remain as it is if you increase the prices or if you decrease the prices. तो आपने प्राइसेस भी बढ़ाए या प्राइसेस भी कम कर दिए तो क्या हो जाएगा आपका प्राइसेस अगर कितना भी कम कर दो लेकिन लेवल ऑफ डिमांड विल रिमेन एज इट इज. That is something about market equilibrium. Okay, so here the intersection of these two lines, that is demand line and supply line, that is called as a market equilibrium. So that once you understood the market equilibrium, after that you should not supply more. अगर आपने सप्लाई भी किया, मार्केट इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ गया, उसके बाद सप्लाई और डिमांड इक्वल होना चाहिए. दैट इज समथिंग अबाउट मार्केट इक्विलिब्रियम. अगर उससे ज्यादा अगर सप्लाई किया तो दैट विल बी एक्सेस सप्लाई व्हिच विल बी नॉट परचेस्ड बाय द कंज्यूमर. ओके, एंड बिलो उसके अगर बिलो भी किया तभी भी क्या हो जाएगा, शॉर्टेज ऑफ सप्लाई हो जाएगा. गेटिंग दिस? दैट्स व्हाई एज अ मैन्युफैक्चरर you should know what is the market equilibrium point. मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट में यानी उससे आगे मेरा क्वांटिटी बढ़ने वाला नहीं है, डिमांड बढ़ने वाला नहीं. Okay, so the equilibrium price is at P1 and equilibrium quantity is at Q1. तो आपने क्या करना चाहिए? You have to maintain this price P1 and because you are already known about the how much quantity should be consumed in the market. That is the Q1 amount of quantity will be consumed into the market so that you can keep price stable as P1. Okay, so let us see with the help of diagram. Okay, so when the market is in equilibrium, the prices of goods and services tends to stay same. Means what? अगर मार्केट इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रहा तो क्या होता है, गुड्स के प्राइसेस will remain as it is or we have to keep as it is or equal. We should not make increase or decrease in the prices because demand तो change नहीं होने वाला. Equilibrium is the price at which quantity demanded by consumer is equal to quantity supplied by consumer. So quantity supplied और by the suppliers, यानी quantity supplied और quantity demand अगर equal है तो दूसरी point को equilibrium point बोलते हैं. When either demand or supply changes, however, equilibrium price and quantity also change. जैसे कि demand and supply जैसे कि change होगा उसके हिसाब से equilibrium prices भी हम लोग change कर सकते हैं. At the market equilibrium, price is called as equilibrium price and quantity is called as at that equilibrium point, the price is called as equilibrium price and quantity is called as equilibrium quantity. Now look at this graph. Just go through this graph. I will explain you. So market equilibrium graph is here. On just look at the table. I have taken prices, quantity demanded and quantity supplied. Yani supply, demand and prices are there in the table. So let us see. For example, I have kept 5 rupees as a price. If the price is 5 rupees at that time, let us see the demand will be 10 and quantity supplied will be, for example, 50. So if I am decreasing the price to 4 rupees, तो हमारा क्या है, what is the relationship between price and demand? क्या relation है price and demand में? We have seen the law of demand. कौन बताएगा मुझे? Sir, when price falls, demand rises. Yes, okay, price falls, demand rises. And what is the relationship between price and supply? प्राइस एंड सप्लाई में क्या रिलेशन है? प्राइस अगर बढ़ती है तो हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट कमाने के लिए एज अ मैन्युफैक्चरर वी शुड ज्यादा सप्लाई करोगे ना आप लोग, ठीक है? तो वही इधर होता है. देखिए, मीन्स व्हाट, देयर इज द इनवर्स रिलेशनशिप और नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड एंड देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई.
तो अकॉर्डिंगली जस्ट लुक टूवर्ड्स, पहले मैंने प्राइस रखी है 5 रुपीज, तो 5 रुपीज को मेरा डिमांड, मार्केट डिमांड है 10 क्वांटिटीज, एंड सप्लाई कितना किया मैंने एज अ सप्लायर 50 यूनिट्स किया. नाउ आई एम डिक्रीजिंग द प्राइस, तो व्हाट हैपेंस हियर, जब मैं प्राइस 5 से 4 करता हूं तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, कस्टमर का डिमांड बढ़ता है. सो डिमांड बिकेम 20, यानी प्राइस कम कर दिया, डिमांड बढ़ गया. देन अगर प्राइस कम हो गई, इसका मतलब एज अ मैन्युफैक्चरर व्हाट आई विल थिंक, आई शुड डिक्रीज द सप्लाई एज वेल. यानी बिकॉज प्राइस कम हो गई, सप्लाई कम होगा, प्राइस बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगा. So at 4 rupees, my demand is 20. Demand has increased, but supply has decreased. Then again, I have decreased price to rupees 3. So at rupees 3, my demand has increased to 30, and supply is also decreased. Supply is decreased to 30. So at 3 rupees, my supply and my demand is same. Again, if I again decrease price to rupees 2, at that time demand may increase to 30, sorry, demand may increase to 40, but supply will be decreased to 20. तो डिमांड बढ़ेगा लेकिन सप्लाई उतना नहीं मिलेगा. समझ में आ रहा है? सो ये नाउ यू हैव एक्स्ट्रा डिमांड बट शॉर्टेज ऑफ योर सप्लाई. तो कितना सेल आउट करोगे? ओनली 20 यूनिट्स, क्योंकि उतना अवेलेबल, तो मेरी डिमांड 40 का है लेकिन मार्केट में 40 यूनिट नहीं है ना. समझ में आ रहा है कंसेप्ट? सो फॉर एग्जांपल, इफ आई गो टू शॉपकीपर टू परचेस 1 kg शुगर, लेकिन उसके पास उतना स्टॉक है क्या, सप्लाई है क्या? नहीं है, उसके पास स्टॉक ही नहीं है, तो कितना परचेस करोगे? 0 ना. समझ में आ रहा है कंसेप्ट? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा डिमांड बढ़ रहा है लेकिन मार्केट में सप्लाई उतना अवेलेबल नहीं है, तो कितना परचेस करोगे? जितना मार्केट में है उतना ही परचेस करोगे ना हम लोग. सो वी विल परचेस एटलीस्ट 20 units or maximum 20 units. Again, you can take example of 1 rupees. अगर 1 रुपी प्राइस किए तो क्या हो जाएगा, डिमांड 50 हो जाएगा, मार्केट में डिमांड 50 का है लेकिन मार्केट में अवेलेबल गुड्स कितने हैं, सप्लाई 10 रुपीज और 10 यूनिट्स, तो कितना सेल करोगे? ओनली 10 यूनिट्स. गेटिंग दिस? So here look at the rupees 3 where supply and demands are equal. So you can sell highest units, that is 30. Okay, and that point is called as the equilibrium point. और वो point को हम लोग क्या बोलते हैं, market equilibrium point, where demand and supply become equal. So the point or the price at which demand and supply becomes equal, that price is called as a equilibrium price, and the quantity at which demand and supply becomes equal, that quantity is called as the equilibrium quantity. And the same diagram, same things I have shown with the help of diagram. So D is your demand curve, S is your supply curve, and on x-axis I have taken prices, on y-axis I have taken quantities. When demand curve and supply curve interact with each other, that point is the equilibrium point. So at that point, my price level is 3 rupees and quantity demanded is 330 quantities. Okay, got idea about this? Yes or no? Tell me fast. Yes, sir. I hope you understand this. Yes, sir. Okay, so this is about market equilibrium. Okay, where demand and supply will become equal. Now उसमें क्या होता है, so there are some of the conditions, movement towards the market equilibrium. मार्केट इक्विलिब्रियम में कंडीशंस क्या क्या होते हैं, अभी जैसे मैंने बताया था, कभी कभी सप्लाई, जस्ट लुक एट द टेबल, लुक एट द टेबल. देखिए यहाँ पे एट ₹4 सप्लाई कितना है, 40 का है, लेकिन डिमांड कितना है, 20 का है. इसका मतलब क्या हो जाएगा, 20 सप्लाई विल बी एक्सेस. एट ₹5 डिमांड 10 की है, सप्लाई 50 है, इसका मतलब 40 अनसोल्ड रह जाएंगे. बट लुक टुवर्ड्स एट ₹2, एट ₹2 देखिए क्या हो रहा है, 40 की डिमांड है, 20 की क्वांटिटी, यानी मार्केट में और 20 की रिक्वायरमेंट है.
अगेन एट ₹1 50 का डिमांड है, 10 का अवेलेबिलिटी है, इसका मतलब कितना सेल करोगे मार्केट में, कितना सेल आउट होगा, ओनली 10 क्वांटिटीज। गेटिंग दिस? सो दीज आर दी सिचुएशंस। तो इस सिचुएशन का इधर हम लोगों को स्टडी करना है। इफ प्राइस इज अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस, प्राइस इज द अबव इक्विलिब्रियम प्राइस, यानी लेट अस लुक टुवर्ड्स द ग्राफ। इक्विलिब्रियम से ज्यादा कौन सी प्राइस है, ₹4 एंड ₹5। अगर प्राइस इज ₹4 एंड ₹5 इज इक्विलिब्रियम प्राइस इज ₹3। अगर 3 से ज्यादा अगर प्राइस है तो इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द सिचुएशन? इफ द प्राइस इज अबव इक्विलिब्रियम प्राइस, क्वांटिटी सप्लाइड इज ग्रेटर देन क्वांटिटी डिमांडेड। जितनी प्राइस ज्यादा रहेगी उतनी ज्यादा क्वांटिटी मार्केट में सप्लाई होगी और उतना डिमांड नहीं रहेगा। मीन्स व्हाट? देयर इज द एक्सेस सप्लाई इनटू द मार्केट। So due to having excess supply and limited demand, sellers cannot sell as much they want. तो उतना मार्केट में सेल नहीं होगा क्योंकि डिमांड इज वेरी लिमिटेड. So they will tend to offer buyers at lower price. In that case, what supplier has to do? Supplier has to reduce the price up to 3. तो यहाँ पे ₹4 सेलिंग प्राइस करने से मेरा डिमांड तो चेंज नहीं होने वाला है. दैट्स व्हाई व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू रिड्यूस माय प्राइस अप टू 3. दैट टाइम व्हाट विल हैपन, जस्ट एट ₹4. 1 minute, I will show with the help of diagram. Okay, at ₹4, just try to understand what is the demand of market. 20. तो मुझे अगर डिमांड बढ़ानी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू डिक्रीज अप टू 3 लेवल वेयर यू विल गेट this much of demand. At ₹4 means what? Your supply price is higher, that's why your supply is also higher. Your supply is 40, but your demand is only 20. समझ में आ रहा है? So whatever is the difference between these two, to remove this gap, what I have to do, I have to decrease my prices up to 30. That time my demand will increase up to 30. Getting this? So this may a situation. Okay. Now that thing I have to study with this. So here, if price is above the equilibrium price, means what? Quantity supplied is greater than quantity demanded. That's why there is the excess supply into the market. And to get extra sale, what I have to do? Anyway, I have to reduce my price up to equilibrium price. Then I will sell out more units. Therefore, price will be tend to move downwards towards the equilibrium price. तो इसके इसी situation में क्या होगा? Price नीचे आ जाएगी. Just look at this diagram. Price is above equilibrium price. First condition of the situation. Try to understand. The same graph is there. P1 is the equilibrium price. P2 is the supply price, which is above the equilibrium price. Understood this graph, or should I explain again? Tell me fast. Don't waste our time. If you don't understand, just tell me. I will explain. If you understand, then you just tell me yes.
Yes, students. Yes or no? My question is very simple. अगर आपको अंडरस्टैंडिंग हुआ है तो अगली स्लाइड जाएंगे, अगर नहीं है तो इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे. What happened? Just give me reply, any of the students. Sir, please. Explain करना है. Yes, sir. Okay. See here. Just try to understand the graph. मेरा इक्विलिब्रियम प्राइस है P1. कौन सी प्राइस P1 है? जहां पे मेरा डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को क्रॉस हुआ है. Getting this? So जहां पे क्रॉस हुआ, just look at the diagram. जहां पे डिमांड और सप्लाई क्रॉस हुआ है उसी प्राइस को बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस एंड दैट प्राइस इज P1. और जहां पे डिमांड एंड सप्लाई एक दूसरे को क्रॉस हुआ है उसी से अगर मैंने परपेंडिकुलर डाला नीचे तो दैट इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी. मींस व्हाट? आवर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज Q3. गेटिंग दिस? अभी मान लो तो मेरा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है Q3 और मेरा इक्विलिब्रियम प्राइस है P1. अभी मान लो जैसे कि 3 रुपीज मेरा था इक्विलिब्रियम प्राइस एंड 30 आई थिंक क्वांटिटी था ना. तो मान लो मैंने प्राइस बढ़ाया तो 3 रुपए से P2 किया, P2 यानी 4 रुपीज किया. तो 4 रुपीज को किया तो क्या होता है? जस्ट हियर 1 मिनट. एट 4 रुपीज अगर मेरा प्राइस रहेगा तो यहाँ पे क्या हो रहा है? मेरा जो सप्लाई है वो कितना है? देखो मार्केट से सप्लाई कितना हो रहा है? कितना है? Q2. Q2. इसका मतलब क्या है? लेकिन मार्केट से सप्लाई Q2 है लेकिन मार्केट में डिमांड कितना रहेगा? Q1. Q1 रहेगा. इसका मतलब Q2 मेरा डिमांड नहीं है लेकिन सप्लाई Q2 है और Q1 मेरा डिमांड है. तो कितने क्वांटिटी ज्यादा रहेगी? यहाँ पे एक्सेस सप्लाई रहेगा. इतना वाला सप्लाई एक्सेस रहेगा मेरे इसमें. So if the supply is excess, अब ये एक्सेस सप्लाई मुझे मार्केट में बेचना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? सप्लाई अगर एक्सेस मार्केट में हुआ तो क्या होता है? क्या होता है? Price falls. प्राइस फॉल्स होती है ना. तो एज अ मैन्युफैक्चरर मुझे P2 से P1 आना पड़ेगा. तो जो कि मेरा क्या हो जाएगा? मेरा क्वांटिटी Q1 जो था वो Q3 तक आएगा. गेटिंग दिस? मुझे यहाँ पे Q2 और Q1 में जो गैप है वो गैप निकालना है. इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इफ सी हियर, इफ आई रिड्यूस द प्राइसेस अप टू P1, तो P1 तक अगर मैंने रिड्यूस किया तो क्या हो जाएगा? मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट का जो ये पॉइंट है इधर तक मेरा सप्लाई बढ़ेगा. यानी डिमांड मार्केट के एक्चुअली 30 ही है. अगर ज्यादा भी मार्केट में रहेगा तो 30 से ज्यादा बेचेगा नहीं. तो इसलिए मुझे क्या करना है? I have to reduce my supply as well as I have to reduce my price. Because anyhow, as a manufacturer, I have to go towards the equilibrium position. Okay. Now, so here, if prices are more, at that time there will be excess supply into the market, and due to having excess supply into the market, प्राइस शुड हैव टू फॉल्स. प्राइस नीचे आना चाहिए. कहां तक नीचे आना है? अप टू P1. क्योंकि मार्केट का कैपेसिटी कितना है सेल आउट करना? Q3 है. तो हम लोग क्या करेंगे? सप्लाई कम करेंगे और Q3 तक हमारा क्वांटिटी मार्केट में रखेंगे. बाकी वाला माल वी शुड नॉट प्रोड्यूस. हम लोग उतना प्रोडक्शन ही नहीं करेंगे. गेटिंग दिस? नाउ 1 मिनट. If price was P2, जब प्राइस P2 है, at this price is above equilibrium, तो प्राइस P2 है P1 से ज्यादा है यानी इक्विलिब्रियम से ज्यादा है. एंड सप्लाई Q2 would be greater than Q1. तो डिमांड कितना है एक्चुअल? P2 को डिमांड Q1 है लेकिन मैंने सप्लाई Q2 इतना किया है. इट इज फार मोर, it would be greater than demand Q1 से ज्यादा है. And therefore supply is too much supply. There is too much supply.
means what, how much exactly surplus is there, that is Q2 minus Q1. तो इतना surplus quantity अभी market में है. Therefore firm would reduce the price and supply less. तो firm क्या करेगी, prices कम करेगी और सप्लाई भी मार्केट का कम करेगी, तभी जाके मार्केट में प्रोडक्ट एट ₹3 बेचने वाला है. मींस व्हाट, आई हैव टू रिड्यूस द प्राइस as well as I have to reduce the supply which is available into the market. मार्केट में जो माल गया है वो वापस लाने का है. As a manufacturer or as a supplier, this would encourage more demand and therefore the surplus will be eliminated. जो मार्केट में एक्स्ट्रा सरप्लस है वो कैसे एलिमिनेट करना है, मुझे पता है कि मार्केट का इक्विलिब्रियम पॉइंट 30 है, तो 30 रीच होने के लिए मुझे प्राइस डिक्रीज करना पड़ेगा और जो एक्सेस सप्लाई गया है 40 का यानी और 10 का गया है उसको वापस लाने का है. दिस वुड एनकरेज मोर डिमांड एंड देयरफॉर द सप्लाई विल बी एलिमिनेटेड. जो एक्स्ट्रा सप्लाई हो एलिमिनेट करना है एंड द न्यू मार्केट इक्विलिब्रियम विल बी Q3 एंड P1. तो नया मार्केट इक्विलिब्रियम सिचुएशन क्या है, Q3 is the equilibrium quantity and P1 is the equilibrium price. Now do you understand now? Yes, or Yes, you sir. need more explanation? Tell me fast. Understood, sir. Okay. Now next condition, उल्टा भी हो सकता है ना. अभी कैसे किया मैंने, प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस से बढ़ा दिया था, अभी उल्टा भी हो सकता है. if the price is below the equilibrium price, प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस से कम रखिए, ₹3 रखना था ₹2 रख दिए, तो what will be the market condition? Means what here, quantity demanded will be more than quantity supplied. प्राइस कम कर दिए तो क्या होता है, सप्लाई कम होता है. सप्लाई कम होता है इसका मतलब क्या है, डिमांड ज्यादा है. Means what, there is the excess demand into the market, exactly opposite of previous slide. Okay, here buyers will not be able to buy all they want to buy. जितना भी उनको परचेस करना है उतना मार्केट में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि there are so many manufacturer who don't want to sell the product at lower price, इसलिए उन्होंने स्टोर में रखा है. स्टोर में प्रोडक्ट रखने से क्या हो गया, मार्केट में उतना सप्लाई अवेलेबल नहीं है. अगर उतना सप्लाई अवेलेबल नहीं है तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली अगर शॉर्टेज डिमांड का होता है तो डिमांड के प्राइसेस, क्वांटिटी के प्राइसेस ऑटोमेटिकली बढ़ते हैं. सो बायर विल नॉट बी एबल टू बाय ऑल दे वांट टू बाय, so they will tend to offer sellers higher price. तो क्या करेंगे, ज्यादा प्राइस देंगे क्योंकि मटेरियल इज नॉट अवेलेबल. ओके, therefore price will tend to move towards the equilibrium price. तो ये नीचे वाला प्राइस है तो ऊपर वाले प्राइस तक यानी ₹2 से हम लोग ₹3 तक कर सकते हैं, बिकॉज 3 इज आवर इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम प्राइस. अगर इसके ऊपर गए तो फिर मेरा डिमांड कम हो जाएगी. Getting this, so that I can reach to the equilibrium point. So just look towards exactly opposite of first situation. If a price is below the equilibrium point, क्या होता है देखिए. And just read the explanation. This explanation is exactly opposite of previous explanation. Now see here in this graph, again D is the demand curve, S is the supply curve, P1 is the equilibrium price, and P2 is the price which is below than equilibrium price. So at price P2, सप्लाई कितना है देखिए, सप्लाई कितना हो रहा है, Q2 इतना सप्लाई हो रहा है. एट प्राइस P2 सप्लाई इज Q2. Getting this? And P1 at price P1 supply is Q3. Means what? Here the demand for market is Q3
मार्केट में डिमांड कितना है Q3 यानी फॉर एग्जांपल 30 यूनिट्स, बट ड्यू टू डिक्रीज इन द प्राइस actual supply is becoming Q2. Q2 means what? It is 20 units. मेरे डिमांड मार्केट में 30 का और मेरे पास कितने यूनिट्स है? 20 यूनिट्स है. मीन्स what? There is the shortage of supply. There is the shortage of supply. सप्लाई में कितना शॉर्टेज है? 20 यूनिट्स का शॉर्टेज है. So just look at this diagram. So what will happen? Again, what you will do automatically, due to having excess demand into the market, automatically prices may go up. Prices may go up to which point prices may go up to equilibrium point, that is the P1. P1 तक prices ऊपर जाएंगे. Getting this? So accordingly, what we will do, so you will increase your prices, automatically supply into the market can increase. अगर prices बढ़ाए तो क्या हो जाएगा? Because consumer is going to purchase your product because there is already shortage. तो कब तक consumer purchase करेगा? जब तक उसका equilibrium quantity तक market में नहीं मिलेगा. Equilibrium quantity तक प्रोडक्ट नहीं मिलेगा मार्केट में, तब तक वो क्या करेगा? कंज्यूमर मार्केट से कंज्यूम करेगा. सो इन दिस डायग्राम प्राइस P2 इज बिलो द इक्विलिब्रियम पॉइंट. प्राइस P2 जो है वो इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे है. एट दिस प्राइस डिमांड वुड बी ग्रेटर देन सप्लाई. सो डिमांड वुड बी ग्रेटर देन सप्लाई. सप्लाई कितना हो रहा है P2 को? Q3 इतना हो रहा है. गेटिंग दिस? बट हाउ मच इट इज रिक्वायर्ड? अप टू at this price demand would be greater than supply, therefore there is the shortage of Q3 minus Q1. Okay, if there is the shortage, the firms will put up prices and supply more. अगर डिमांड है तो प्राइस भी बढ़ाएंगे, organization will increase the prices as well as they will increase the supply as well. Getting this? Supply more. As price rises, there will be a movement along the demand curve and less will demanded. तो प्राइस राइज होने से क्या हो जाएगा? डिमांड कर्व ऊपर जाएगा. ओके, डिमांड कर्व ऊपर जाएगा एंड देयरफॉर द प्राइस विल राइज टू P1. प्राइस किधर तक राइज हो जाएगी? P1 तक. बिकॉज एट दिस इक्विलिब्रियम पॉइंट P1, your total number of quantity demanded, you will be having equilibrium quantity. So in this way, price P1 becomes equal to quantity demanded equal to Q3. So this is the market equilibrium point. तो उसको फिर equilibrium point को आने के लिए I have to increase the price. So automatically supply from the market increases due to increase in price. So this is the condition. Understood this condition? If price is below the equilibrium price, तो आपको क्या एक्शन लेनी है? Yes, tell me. Are you getting me what I'm saying? Yes. Okay. Now next one is the movements to a new equilibrium. अगर डिमांड इंक्रीज होता है या सप्लाई इंक्रीज होता है तो मार्केट इक्विलिब्रियम में मूवमेंट्स कैसी होती है? जस्ट लुक एट द डायग्राम. वी हैव प्राइसेस P1 P2, क्वांटिटी Q1 Q2 एंड डिमांड D1 D2. इंक्रीज इन डिमांड होगा तो कैसे ऊपर जाता है इक्विलिब्रियम पॉइंट. सो एट D1 डिमांड रेट, माय इक्विलिब्रियम पॉइंट इज P1 Q1. अगर मार्केट का डिमांड बढ़ेगा, so that demand I have shown with the help of D2. So if the capacity of demand increases at that time, my equilibrium point can also go above. तो कितना है? पहला D1 डिमांड में मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट था Q1 एंड प्राइस थी P1. फॉर एग्जांपल 3 रुपीज प्राइस एंड 30 क्वांटिटीज. अगर मार्केट का डिमांड ही बढ़ता है, मार्केट का रिक्वायरमेंट बढ़ेगा, on that point my equilibrium point also go up. So equilibrium price become rupees, for example 4, and quantity equilibrium will become rupees 40 quantity. So being a manufacturer, I need to have to estimate about demand. I have to forecast our demand. So on the basis of forecasting of our demand,
you can decide the, you can say the, you can find out the market equilibrium. So what will happen if there is the increase in demand? अगर demand increase हो गया तो क्या होता है? Supply can also increase, but your equilibrium, market equilibrium position will also increase. If there was an increase in the income, तो demand कब बढ़ता है? लोगों का income बढ़ने के बाद लोगों क्या होता है? Demand बढ़ती है. Okay, if there is or there was an increase in the income, income बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? Demand curve would shift to the right from D1 to D2. लोगों का अगर income capacity बढ़ेगी तो market का demand भी बढ़ता है. Initially there would be a shortage of the goods. तो पहले goods का shortage रहेगा. Therefore the price and quantity supplied will increase, leading to the new equilibrium. So price or quantity will, what will happen due to having a shortage into the quantity, what will happen? So price will also increase towards the positive direction and supply will also move towards P2 and Q2. So this is the increase in the demand. Demand increase कब होती है? Income increase होने से. इनकम, अगर इनकम इंक्रीज होता है तो मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट भी ऊपर जाएगा ड्यू टू इंक्रीज इन द इनकम. गेटिंग दिस? सो इनिशियली व्हाट विल हैपन? इनकम हैज बीन इंक्रीज्ड, income has been increased, but quantity is not available that much of in the market. So initially there will be the shortage of demand, and due to shortage of demand, what will happen? Prices increases automatically. So if the price increases, it is the indication to us that we should have to increase the supply. So automatically quantity demanded will be more. So this is the moment of new equilibrium in case of increase in the demand. Okay, now next one is the increase in the supply. अगर supply excess होता है तो क्या होता है? Getting this? So for example, W1 is the supply at one point. Okay, and W2 is the supply at other point. If there is the excess in the supply, अगर supply excess हुआ है, लोगों का income कुछ stable है, तो equilibrium point is, market equilibrium point is the Q1 W1. मान लो in case income has decreased, लॉकडाउन आ गया, पेंडेमिक आ गया या रिसेशन आ गया, तो क्या हो जाएगा? इनकम विल डिक्रीज. अगर इनकम डिक्रीज हो गया तो मार्केट का इक्विलिब्रियम भी नीचे आएगा ना. Okay, that supply and demand will be decreased, and due to decrease in the demand, automatically supply will also decrease. Getting this? Because price is going to decrease. If there is a decrease in the price, automatically supply will also decrease, and with respect to this supply, to maintain our equilibrium point, what we have to do? We have to sell equilibrium quantities. Getting this? So this is something about increase in the supply. In case of increase in the supply, supply will be excess into the market. If supply is excess, demand will decrease, and due to decrease in the demand, I have to reduce my price. I have to reduce my prices. So for example, on x-axis I have taken the wages. लोगों का इनकम कम हो गया, इनकम अगर ज्यादा है तो सप्लाई ज्यादा रहेगा, डिमांड ज्यादा रहेगी. लोगों का इनकम कम हो गया तो क्या हो जाएगा? सप्लाई अगर एक्सेस है तो सप्लाई भी मुझे डिक्रीज करना पड़ेगा, बिकॉज दैट मच अमाउंट ऑफ क्वांटिटीज आर नॉट सोल्ड इनटू द market. So this is the condition for increase in the supply. Getting this? Yes or no? Okay. Now next is the demand curve shifts. देखिए, so what are the situations where the demand curve can move upward and downward, or there will be fluctuations into the demand curve. So changes in some demand related factors affect the quantity demanded at every price. So demand related factors में अगर कुछ changes हो गए तो which are the factors or which are the things? So first one is the consumer preferences. Consumer preferences may change as per the decrease or increase in the income. मेरा income कम ज्यादा होने से मेरे preferences change होते हैं. समझ में आ रहा है concept? If my income is 50,000 rupees, that time I am going to use the, for example, Bata shoes. If my income increase to the 1 lakh, that time I will go to next brand. So as income increases,
preferences of the customers can also increase or decrease. So due to which your demand can also increase and decrease. तो मेरा crowd change हो जाएगा, तो crowd change होने से मेरे product का demand भी ऊपर नीचे आता है due to consumer preferences to the products. Second one is the income of the consumer. Consumer का income change होने से भी preferences change होंगे and लोगों के automatical भी preferences. Some of the times consumer get bored with the existing product. पिछले 10 साल से वही product use कर रहे हो. Let us have some new brand. तो preferences change होने से demand change हो जाएगा. Income change होने से demand change हो जाएगी. Then prices of other consumer goods. बाकी goods के prices कम होने से भी हम लोग क्या करेंगे, दूसरे प्रोडक्ट के. फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक एन एग्जाम्पल की एक एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल मॉन्जिनिस के प्रोडक्ट्स की अगर प्राइसेस कम हो गई तो हम लोग वी विल शिफ्ट टुवर्ड्स द मॉन्जिनिस इन स्पाइट ऑफ लोकल ब्रांड्स. गेटिंग दिस. सो प्राइसेस ऑफ अदर कंज्यूमर गुड्स के अगर नीचे आते हैं तो हम लोग दूसरे प्रोडक्ट के तरफ शिफ्ट होते हैं. देन एक्सपेक्टेशंस अबाउट द फ्यूचर. So due to expectations about the future of the consumer demand can also vary. So such changes can affect demand in general and they can change the position of entire demand curve. तो ये expectations, ये demand curve factors change होने से मेरा demand, मेरे product का demand ऊपर नीचे जाने वाला है. As a manufacturer, I should know this. But those factors usually do not affect पोजीशन ऑफ द सप्लाई कर. तो सप्लाई के ऊपर ये ज्यादा इंपैक्ट नहीं करेंगे लेकिन डिमांड के ऊपर ज्यादा इंपैक्ट होना चाहिए वो होगा. सो दैट विद दिस फैक्टर आई हैव टू मैनेज माय सप्लाई by considering the demand, by analyzing the demand, by estimating the demand. As a manufacturer, I need to manage my supply. I have to control my supply accordingly. So these are the factors due to which demand curve may shift. Then why there is the changes in the consumer preferences. Consumer के preferences कब change होते हैं? So first is the new information मिल गया, कुछ information with the help of advertisement, with the help of banners, with the help of, for example, with the help of friends group. If the consumer is getting new information about the product, that time we will go there. Then some of the times it may be a passion to use that particular product. Then experience about this product. So past experience about this product due to which the demand curve can change. So with respect to your demand, you need to arrange your supply. There will be no excess supply into the market. There will be no shortage supply into the market. For that purpose, you need to understand market equilibrium point. So this was something about market equilibrium point. Did you understand this concept? Tell me. Yes, sir. Okay. Now let us go to the next article, that is production. ठीक है. अभी मार्केट इक्विलिब्रियम कंसेप्ट हमारे ध्यान में आ गया, तो मार्केट इक्विलिब्रियम के हिसाब से मुझे क्या करना है, मुझे सप्लाई मेंटेन करना है. तो सप्लाई मेंटेन करने के लिए मुझे प्रोडक्शन भी ऊपर नीचे जाएगा, मेरा प्रोडक्शन भी कम ज्यादा हो जाएगा. अभी प्रोडक्शन एक्चुअली है क्या? सो प्रोडक्शन मीन्स व्हाट? इट इज द मेथड ऑफ टर्निंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स. जो रॉ मटेरियल का फिनिश गुड्स में जो कन्वर्शन होता है, that is called as a production. And for this process, the entire process is called as a manufacturing. Means what? Conversion of raw material into finished goods, it is nothing but your production. Okay, so creation of, in other words, it means the creation of something from basic new inputs. तो हम लोग इनपुट से, रॉ मटेरियल से अगर कुछ बनाते हैं तो उसको बोलते हैं प्रोडक्शन. ओके, प्रोडक्शन may be also refers to the goods being to be produced. जो goods हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं उसी प्रोसेस को प्रोडक्शन बोलते हैं. So these are the basic meanings of the production. And what are the factors of production? तो प्रोडक्शन करने के लिए मेरे पास क्या क्या होना चाहिए? So 4 factors are required. One is the land, second is the labor, next is the capital, and we should have an organization or firm where these activities will be conducted.
So what are the four factors of production? That is land, labor, capital, and organization. If any of the factor is absent, at that time you can't go for production. For example, organization नहीं है, factory नहीं है, तो production किधर करो? Getting this? Land नहीं है, तो if space is not available, that time we should not go there. अगर labor नहीं है, तो labor के बिना production नहीं होगा, पैसे के बिना production नहीं होगा. ऑर्गेनाइजेशन यानी आपके रिसोर्सेस अगर अवेलेबल नहीं है, तो मशीनरी नहीं है, प्लेस नहीं है, मेथड नहीं है, तो हम लोग प्रोडक्शन नहीं करो. So to conduct the production activity, we require land, labor, capital, and organization. Four factors. These are the four factors of production. इसको क्या बोलते हैं? Four factors of production. अगर इन चारों में से एक भी कोई भी एक फैक्टर एब्सेंट रहेगा, तो हमारा प्रोडक्शन नहीं हो जाएगा. हम लोग क्यों प्रोडक्शन कर रहे हैं? To sell this production into the market and to generate the profit. That's why we are doing this. अभी प्रोडक्शन फंक्शन किसको बोलते हैं? देखिए, production function refers to the functional relationship between, it is the production function is the functional relationship between quantity of goods produced, कितना प्रोडक्शन करने वाले हैं, and factor of production. It is the relationship between quantity of goods produced to be produced and factor of production. That is the what it is the relationship between your output and input. Output means what? How many products you are producing, and factor of production means what? These are the inputs, that is the land, labor, capital, और क्या देखा था हम लोगों ने? Organization. Okay, so these are the what is the exact relationship between, and what is the relationship between this factor? That is nothing but factor production factor. So production function reflects how much output we can expect if we have to, if you have so much of labor and so much of capital. अगर मेरे पास इतना लेबर है, इतना कैपिटल है, इतना लैंड है, तो उसके हिसाब से how many units I can produce, that I will decide. That is nothing but your production function. That is nothing but your production function. So to decide my production function, I need to understand my capacity of land, capacity of my labor, capacity of my resources. So with respect to this capacity, with respect to these inputs, I will decide the my level of activity, or I will decide the output. Okay, so it is an indicator of physical relationship between input and output. दोनों का relation हम लोग यहाँ पे find out करेंगे, establish करेंगे. That is nothing but production function. Like demand function, the production function is for definite period. तो डिमांड जैसे कि एस्टिमेट करते हैं, उसके हिसाब से मुझे प्रोडक्शन फंक्शन लेवल ऑफ एक्टिविटी कुछ दिन के लिए, कुछ वीक के लिए, कुछ महीने के लिए, कुछ साल के लिए, कुछ क्वार्टर के लिए मुझे एस्टिमेट करना पड़ता है. Getting this? So what will be my level of activity with the respect to these sources, these resources? That is something about production function, and it is definite. It is definite. 100 quantity, 50 quantity, 1 lakh quantity, 10,000 quantity. This is the level of your activity. With every development in the production function of a firm depends upon the state of technology. What type of technology you are using there? And with every development in the technology, the production function of the firm undergoes to the change. जैसे कि टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी, उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे? प्रोडक्शन फंक्शन we will increase or decrease. Production function is going to change. Okay, so just see the production function equation. So it is the relationship between your input and output. Just try to understand in simple word. Production function is the relationship between input and output. Input means what? Your resources. What are your resources? Inventories, methodologies, labors, capital, your resource, your organization, and land. And output means what? Level of activity, how many units you are producing. Okay, and this production function is denoted by Q. So Q is function L. Q is called as a production function, or it is the quantity of output. L is your labor, C is your capital, and N is considered as a land. So production function is
function of land, capital, and labor. Okay. Hence, the level of output, that is the Q, depends on these quantities. तो लेवल ऑफ आउटपुट, मेरा आउटपुट किसके ऊपर डिपेंड है? अगर लेबर काम पे नहीं आया, मेरा आउटपुट जीरो हो गया. अगर मेरे पास पैसे नहीं रहेंगे, आउटपुट जीरो रहेगा. अगर इफ यू डोंट हैव अ रिसोर्सेस लाइक लैंड, so I can't, my production function will be zero. So that this Q, total number of units to be produced, that is something about production function. It depends upon L, C, and N, which is available with firm. So quantity of land, quantity of capital, amount of capital, and number of labors, which affect on your production function, because these are the major resources of the organization. So due to which my level of activity can change, and accordingly I will decide the production function. And in simplest, 1 minute, in simplest case where there are only two inputs, अगर normal इसमें क्या होता है, दो ही inputs होते हैं, because already we are aware, already we should have land. तो हमारे पास लैंड हमेशा होती है, लेकिन कौन से पैरामीटर से मेरा प्रोडक्शन ज्यादा इंपैक्ट करता है, दैट इज समथिंग अबाउट लेबर एंड कैपिटल. अगर लेबर टाइम पे नहीं है, अवेलेबल लेबर नहीं है, तो लैंड होके भी, कैपिटल होके भी कुछ फायदा नहीं. Getting this? You, to certain extent, you can manage your land, but it is difficult to manage your labor and capital. Capital means supply of funds to the organization for doing the manufacturing activities. So basically, in simplest thing mein, Q is the function of only L and C. You can express that Q is the function of LCN, but major part of the time company is having this land. कंपनी के पास लैंड हमेशा होती है, फैक्ट्री हमेशा होती है, लेकिन कौन सा फैक्टर ज्यादा, दो फैक्टर ज्यादा असर करते हैं, दैट इज द लेबर एंड कैपिटल फैक्टर्स. ओके. Now, what is mean by cost of? So, do you understand the production function किसको बोलते हैं? What is the production function? So, production function refers to the land. It is the input output relationship. It is the relationship between input and output. Input means your resources like land, labor, and capital, and output is your total number of quantity. Now, cost of production. See, cost of production क्या है? Cost of production is, it refers to the total cost incurred by the business to produce a specific quantity, or to offer the service. So total cost, it includes direct cost as well as indirect cost. Cost of production means what? It is the sum of direct cost and indirect cost which we have spent on the product. That is nothing but cost of production. And it refers to all the direct and indirect cost business face from manufacturing of the product or providing the services. तो ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए या सर्विस देने के लिए जो कुछ कॉस्ट आ जाएंगे, डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट, तो उसका जो समेशन होता है उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. ओके. एंड द प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्लूड्स द लेबर कॉस्ट, रॉ मटेरियल कॉस्ट, कंज्यूमेबल, मैन्युफैक्चरिंग सप्लाईज, एंड ऑल काइंड ऑफ जनरल ओवरहेड. By summation of all these parameters, your total cost of production will be calculated. Getting this? Very simple. Cost of production is the summation of all cost which incurred into the manufacturing activity. So it may be a direct cost, it may be indirect cost. So summation of direct cost as well as indirect cost, that is your cost of production. So it may include labor expenses, raw material charges, consumables required for the organization, then supplies, then general kind of overheads are they comes under cost of production. Okay. So student, we have finished our time. Let us stop here, and remaining part we will see the next into the next lecture. I hope you have received PPTs of second unit, na? Yes, sir. Everybody got the PPTs? Yes, sir. Okay. So to the next lecture or next to next lecture we will finishing third unit as well. छोटा है third unit, fourth unit बहुत बड़ा है. Okay. So let us stop here. Thank you so Sir. much. हॅलो Yes. सर एक्झाम मध्ये न्यूमेरिकल्स येऊ शकतात काय? टोटल कॉस्ट वगैरे नसतात वगैरे. न्यूमेरिकल नसतात. तुमचे केस स्टडीज रिलेटेड काही क्वेश्चन्स असतील. अच्छा. सिच्युएशन बेस्ड क्वेश्चन्स राहतील. हम्म. न्यूमेरिकल नाही येतच आपल्याला इकडे.
अच्छा ठीक है ठीक है। सर, थैंक यू। ओके।